Assalamu alaikum everyone and welcome to yet another episode of Let's Talk. I have with me Mariam Khan. Hello Mariam, how are you? Hi Zabad, how are you? मेरी एक्साइटमेंट से आपको पता चल रहा होगा कि मरियम इज़ मरियम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीपल एंड वाई आई से दैट इज़ बिकॉज वो एक होता है ना कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त होता है जिससे मिलकर जिससे बात करके आप बेहतर महसूस करते हैं और आप वो चीज़ें समझने लगते हैं जो यूजुअली आप ख़ुद अपने अंदर जो है ना पिन पॉइंट नहीं कर सकते. तो मरियम इज़ दैट पर्सन. आई एम श्योर मेरी बातों से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम एक वेल बीइंग कोच से बात कर रहे हैं. एंड आई वुड वांट. Thank you so much, Zabad. You're welcome, Mariam. Tell us about yourself. First of all, I'm really honored to have been called on this show and really touched by the words that you've chosen to use for me. But it's literally my pleasure to be here. And what exactly I do is that there are a couple of things that I take care of. I'm an entrepreneur. I've started my own business under the name of Bloom, and that is a behavior readiness firm. Along with that, I'm a behavior and mindset coach, growth mindset coach. And I provide well-being coaching and life coaching using Neuro-Linguistic Programming. So those are certain tools and techniques that I make sure that they are there when I'm trying to create some intervention and help for the fellow human beings around me. Mm-hmm. So that's the little bit of introduction that I wanted to share with everyone. And thank you so much for having me here. You're welcome, Mariam. Mariam, to start with, पहले तो हम बात करते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन पे. एंजाइटी और डिप्रेशन है क्या? डिफरेंस क्या है इन दोनों चीज़ों में? Okay, if I tell you in very simple words, if you want to understand what's anxiety and what is depression, तो आप इसको इस तरह से देखें कि, for example, if this is a straight line, right, and in the middle of this line is right now, और इसके पास्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको डिप्रेशन मिलेगा, और इसके फ्यूचर में आप जाएंगे तो आपको एंजाइटी मिलेगी. Anxiety is always future centered. Whenever we are worried about something going to happen in the future, in anticipation of that, we get anxious. Yes. So that is called anxiety. Very true. However, whenever we are very sad about something that happened in the past, could be a traumatic situation, could be a loss that we were not able to process properly, and we stay stuck in that moment in the past. That is your depressive state. So everyone, you say, whenever we talk about well-being, they always talk about the very important aspect in that, and that aspect is that you have to stay in the now. Yes. That is the middle true. of this past and future, of course, right? Because all the harmony and all the chaos that you have around you, it can harmonize when you are here in the now. Right. So that's a little bit definition of anxiety and depression. And we can talk at length about how exactly we should be aware of situations and symptoms when it comes to anxiety and when it comes to depression. We can talk at length as well on that and how NLP perceives it. So you let me know if you want to know more about that. I would love to share some ideas there. Yes, tell us, Mariam, what is NLP? Oh, that's a very good question. Okay, so NLP, the full form of NLP is Neuro-Linguistic Programming. Yes. And you can understand Neuro-Linguistic Programming. Let me divide it into 3 words: Neuro-Linguistic Programming. So the word neuro is actually related to your brain and your neurons, right? Linguistic is your language. Programming is the wiring in the brain, all right? So when you are in the process of learning the language of your mind, that is what Neuro-Linguistic Programming is. So you're able to understand how your mind actually works. So in Neuro-Linguistic Programming, we try to talk about two segments of the mind, not 3 segments, 2 segments. The first one is the conscious mind, and the second one is the unconscious mind. We try to understand the language of the unconscious mind.
And that's exactly what we are trying to rewire whenever we try to address any kind of problem that we face in our daily life. That can come under the paradigm of life coaching. But let me tell you one thing for sure, that it does not cure any mental ailment. So, for example, if someone is trying to get rid of mania, or you could say schizophrenia, or you could say dissociative personality disorders, and all these ailments which are which the psychiatrists are there to address and the psychotherapists are there to address. We do not medicate. Neuro-linguistic programming coaches and practitioners do not medicate. We do not provide medication. We try to provide alternate source of therapy, using the tools and techniques that have been designed by the group of people that came up with this whole concept. So that's exactly what we use. And what I can tell you for sure in literally a few words is that neuro-linguistic programming is the quickest way to bring results. For example, if you want to go from point A to point B, and if you see that so many areas are there that need to be addressed, so you're going to be dealing with all of them, but the speed will be faster with neuro-linguistic programming, because what we do exactly, we talk to the root cause and we address that particular cause only. So we try to work with the focus management there, we try to work with your focus management. And when we put your focus on the goals that you want to achieve, that's exactly how we achieve the results faster. So I'm really proud of the fact that, neuro-linguistic programming is something that has come really handy when it comes to dealing with a lot of life coaching issues and life issues and problems that my clients usually face. So, yeah. Oh, I'm sure it helps. And tell me one thing more. One thing more. I actually had in my mind today to discuss with your audience about was that there is a perspective of reality that NLP teaches you, and I wanted to share with everyone, because I thought that if we have this perspective of reality, we will be able to probably process the issues and the concerns that we have around us in a more systematic manner, in a more in a rather easier manner, right? So those certain concepts and certain basic concepts that neuro-linguistic programming actually tells you, I would like to share those with you right now. For example, the very first concept that NLP talks about, or you could say the very first presupposition that a life coach practicing NLP needs to have, is the belief that people are not their behaviors. We need to accept the person, and we need to work on the behavior. That's very, very important. Yes, that's very important. We need to accept the person. Exactly. I mean, imagine कितने सारे हमारे problems होते हैं जिसमें आगे किसी की reaction की वजह से और किसी के attitude की वजह से सब कुछ खराब हो जाता है. And we start stigmatizing the person कि यार वो है ही ऐसा. ऐसा ही. Anger issues or this issue or that issue, but we don't realize that's not him or that's not her. Yes. That's the behavior. That's the behavior. Or behavior is like आपका showcase है वो, all the things that happen there, starting from the perception of reality from your 5 senses, उसका end product आपका behavior है. तो आप जब neuro-linguistic programming use करेंगे तो आप actually उन सारे aspects को touch करते जाएंगे. Automatically आपका behavior transform होगा. Wow. So that's the first presupposition that NLP tells you. Wow. That really touches my heart all the time. Whenever I see, that helps me actually see people in a much better light. Yes. Instead of judging them or stereotyping them, that's a very, very important point that I wanted to share. That's very important. I think in the process you start accepting people the way they are, instead of wanting them to be the way you want them to be, or exactly. Yeah, I think that's very helpful. बहुत अच्छी बात कही आपने मरियम. Thank you so much. But I'm telling you, the best part is that
that's scientifically proven, you know. So that actually gives you this I'm sure. confidence as I'm well. sure. That, yes, confidence as well. Yeah. That Yeah. this is not something that an ideal that you're following. Yeah. एक और चीज जो बहुत जबरदस्त न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टॉक्स अबाउट इज दैट कि आप इमेजिन करें कि for example, this is the way I'm looking at the screen right now. ठीक है, मेरे सामने I have a screen and I can see your image and I can see my image, right? But I can't see your home and I can't see the room. It's you who's there in the room, right? And it's me who is there in my room, right? So we perceive reality only as a map. Okay, the map is not the territory. Wow. The territory is different. Yeah. So Yeah. for example, किसी ने कोई इंसिडेंट नरेट किया, वो इंसिडेंट उसने अपने परसेप्शन से जो उस मैप को पढ़ा वो हमें नरेट किया. उसने वो टेरिटरी एक्सप्लेन नहीं की, ना ही उसने वो टेरिटरी एक्सपीरियंस की. तो if you think about it that way, बहुत सारी चीजें आप कम्युनिकेशन से क्लियर कर सकते हैं. Yes. When you think about it that way कि यार okay, no, there may be a chance कि शायद इसमें कुछ details missing हो. There may be a chance कि शायद कुछ details purposely ना बताई गई हो या भूल गया हो इंसान, right? The map is not the territory. Territory is a completely different domain. अच्छा मरियम, एक बहुत मजे जी मैं इस पे मुझे एक ख्याल आया कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो सारा बैकग्राउंड आपको डिस्क्राइब करता है, अपनी प्रॉब्लम आपको बताता है, आई एम श्योर कुछ पार्ट्स उसमें मिसिंग होते हैं. तो हाउ डू यू डू इट? डू यू कंसल्ट देयर फैमिलीज? डू यू वांट टू लर्न द बैक स्टोरी ऑफ इट? हाउ डू यू डू इट? नो, बहुत अच्छा सवाल किया. ज़बात देखें, एज अ कोच there are certain code of conduct that we abide by. उसका पहला code of conduct ये है that we have to stay a blank paper, blank piece of paper. When the client comes and sits across from us, ठीक है, we take his or her word for it. Okay. There are high chances कि client पूरी डिटेल नहीं बता रहा होगा पहली मीटिंग में, पहली सेशन में. बिल्कुल ठीक है. लेकिन आपका जो एक प्रिलिमिनरी सेशन होता है, आप उसमें ये बात एक्सपेक्टेशन से क्लियर करते हो कि देखो कोचिंग इज अ डू विद प्रोसेस, इट्स नॉट अ डू टू प्रोसेस. हम आपके ऊपर थेरेपी नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि ये हम आपके अनकॉन्शियस से बात कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपने इसकी इफ यू डोंट वांट टू डू इट, इट्स नॉट गोना हैपन. पहली बात सही. सो इफ इट्स अ डू विद प्रोसेस, अगर आप कोई डिटेल्स मिस कर रहे हो तो वो आपका फ्लॉ होगा. The process will not complete unless you share all the details. Absolutely. So our responsibility stays with the client. Number one. Number two. There are high chances कि जब हम coaching goals define करते हैं, तो उसमें हमें, for example, 3 areas पे काम करना है. और for example, उसने जितनी भी details बताएं, वो उन 3 areas पे काम करने के लिए बिल्कुल ठीक है. However, शायद हमें 7th session में जाके पता चला कि एक detail थी जो कि बहुत important थी और वो मिस आउट हो गई. क्या हम उस पे डील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है. We will have to again take the client in the confidence whether the client wants to work on that area or not. Without the consent of the client, we can't do it. We cannot take anybody else's word for the client's word. It's the client and the coach only. Okay. Yeah. Okay. And very important, we do not have to consider the past. Coaching can be done future centered as well. We can for sure discuss the past. We can for sure take out the areas that need to be addressed in the past as well. However, we will not linger on it. Whenever we are addressing the root cause, we will go in the past. Once the root cause is addressed, we'll come back in the future or in the now and talk about the future, because coaching is to move forward. It doesn't make you relive everything. It makes you move forward. That's the best way. Yes. That's the best way to explain. Is that the difference between therapy and coaching? I would. That's very controversial because actually. so again, I would say I would talk about it that way, that देखिए जितनी भी studies आई हैं अभी तक, ठीक है,
अगर आप अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हो, वो सिगमंड फ्रॉइड लेकर आया. सिगमंड फ्रॉइड वाज अ साइकोएनालिस्ट, ठीक है. He was a psychoanalyst, psychotherapist. Then Carl Jung came, and he also talked about collective consciousness and so many other aspects. जो आपका हिस्टेरिया एक बीमारी होती थी once upon a time उनके एरा में, तो उसका इलाज उन्होंने हिप्नोसिस से किया था. उस वक्त के टाइम पे हिप्नोसिस को भी एक absurd technique समझा जाता था. They were not accepting it. But right now, hypnosis is something that actually works wonders because hypnosis directly speaks with your unconscious mind, right? Okay. So there are ways to treat your ailments. It's absolutely the choice of the customer, the client, the person, the human who is facing it. जब आपको लगे कि अब दवाइयों से ही बात बनेगी, तो दवाइयाँ जरूरी हो जाती हैं, ठीक है. हम वो नहीं कहते कि you have to get rid of the medicine. However, I can be very very 100% sure when I say with medicine, if you add coaching to it, probably you may not have to continue medicine. Right. There are high chances that you adopt those ways of life that you won't have to rely on medicine anymore. So that is something that I can proudly say about coaching. Right. And Mariam, पता कब चलता है कि अब मुझे जो है कोच की जरूरत है? When is the time? कोच की हमेशा जरूरत, हमेशा. Coach is like, देखिए मैं आपको बताती हूँ, coach is someone who should be present in your life. We need a friend, we need a partner. Yeah. Human beings cannot survive without relationships. First of all, we are born that way. Although we are selfish human beings, but we are born that way. We need to survive in society and with relationships. Right. But there comes a time when you need a facilitator to break that barrier in your mind, especially. So from the mindset to the state to the emotions and then to the behavior. All these 4 or 5 areas that are there in coaching, they will keep happening because you are a human being who keeps evolving, right? तो coach की जरूरत पड़ती है, especially उस वक्त आपको पड़ेगी जब आपको लगेगा कि now there is a lot of clutter in my head. Right. The clutter is emotional. Right. There is a probably unaddressed trauma in your head. There are unaddressed emotions in your head. There are cluttered thoughts which are creating negative thinking, negative emotions. There are beliefs which are stopping you from achieving what you have to achieve. No, in your hearts of your heart ki yaar wo hai mera, but that's the vision that I have to be, or that's the money that it's not able to go there. You need a coach because the coach will actually facilitate you and do it faster. So you need a coach every time. No. You just need to figure out what you want in your life. बहुत तो अच्छी. अगर आपको एक कोच के साथ बैठ के एक डिस्कशन कर लेते हो ना, तो you'll be able to figure that out. Yeah. I think Mariam, तुमने बहुत अच्छी बात की. We need a coach in our life, like we need a teacher, we need a religious teacher or a lawyer. और हम वेलबीइंग के ऊपर हम ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि हमें एक कोच की भी तो ज़रूरत हो सकती है हमारी मेंटल वेलबीइंग के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए. ये बहुत अच्छी बात है. आई थिंक वी ऑल शुड हैव दैट वन पर्सन एंड थैंक गॉड आई हैव यू. सो आई एम लकी. या सो तो टेल मी, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे. ज़्यादा एंजाइटी के क्लाइंट्स हैं या ज़्यादा डिप्रेशन के क्लाइंट्स हैं? अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो दोनों के बहुत होते हैं. बट अभी जो recently, if you ask me for a couple of months ago, starting from January actually or end of December, anxiety. So so there is more like a wave that you can sense in the whole world, right? And if that uncertainty that is killing a lot of people inside their heads. So anxiety is the main. तो आई थिंक पहले that people are coming up with. बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल यू वेरी राइट. पहले ऐसा होता था कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती थी लोगों के अंदर. आई थिंक दे वर लिविंग इन द पास्ट. बट अब क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज होती जा रही हैं कि लोग जो है ना ज़्यादातर उन फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ द कॉज ऑफ देयर एंजाइटी, राइट? तो देन हाउ डू यू ट्रीट देम? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. इंटरवेंशंस होते हैं. अगेन एंजाइटी क्योंकि फ्यूचर सेंटर्ड होती है,
तो आपका जो उस वक्त का एक इवेंट होता है जिसको लेके आप परेशान होते हैं, आप एक उसके ऊपर इंटरवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑफ कोर्स व्हेन यू कम टू अ कोच, देयर इज एन इंटरवेंशन दैट वी परफॉर्म विद यू, एंड व्हेन यू गो थ्रू दैट यू आर एबल टू रीच अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर इज कंप्लीट हार्मनी एंड पीस, एंड देन द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट इंटरवेंशन इज दैट यू कैन डू इट ऑन योरसेल्फ Right. when you learn it from the coach. Because again, there are moments that you will still feel anxious about, because future is uncertain. It was not written to, it was not given in a booklet to us, you know. It will still be uncertain. Yes. We just need to prepare our mind to accept the uncertainty. That's about it. So when we go through that intervention, we're able to, you know, develop those learning learning paradigms in your mind that make you think about the future event with more certainty and more clarity, you could say. Not certainty, but there would be a little clarity, which will give you peace of mind and calmness. That's very, very important. So that's there. Right. However, when it comes to depression, you most of the time, depression is something that is happening because of an unaddressed emotion or unaddressed event in your past. So, for example, one of my clients, she she actually had to face the death of her child, and at the age of, like, the newborn child, it was born dead, you know. Right. And the parents just could not accept the reality, and they did not even have time to process it. Why? Because sooner it happened, a few months down the lane, they started to work, you know, follow their job routine and everything, but the effects started to happen and appear in their work lives, you know. There was absence of there was memory loss happening. There was attention span. There was loss of attention span and focus happening. There were anxiety attacks and panic attacks happening. There were instances where the person was not was just in a state of in that state of mind where he or she just did not want to do anything that he or she used to enjoy. So when we figured out, we sat together, we found out that there is an immense amount of grief that needs to be processed yet. तो आपको आपके ब्रेन में एक छोटा सा ऑर्गन होता है, हिपोकैम्पस कहते हैं उसे. Right. वो आपका ब्लैंक स्टेट होता है, ठीक है. उसका काम ये होता है कि जब आप रात को सोते हैं और आप रेम स्लीप में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, ठीक है, ड्रीमलेस स्लीप भी इसको कहते हैं शायद. तो उस स्लीप में जब आप होते हैं तो वो हिपोकैम्पस का काम क्या होता है कि वो सारा जो पूरा रिकॉर्ड उसने दिन का लिया होता है ना, वो उसको कैटेगराइज करा होता है. कुछ मेमोरीज बना रहा होता है, कुछ को वो कैरल लर्निंग्स में डाल रहा होता है, कुछ को वो किसी और चीज में डाल रहा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो वो कैटेगराइजेशन ऑफ फैक्ट्स कर रहा होता है, राइट. बट when you go through a trauma, when you go through a traumatic event which leads to PTSD, post traumatic stress disorder, which leads to depressive episodes for you, what happens कि आपका जो hippocampus है, it just could not function or process that memory that night. It just stayed with you. तो फिर क्या हुआ, क्योंकि वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट डे की मेमोरीज उसने नेक्स्ट डे की, बट वो जो कल की मेमोरी थी उसने वो एड्रेस ही नहीं की. अब आप देखें, आपके हफ्ते पास हो गए, मंथ्स हो गए, years हो गए, that event just could not be addressed. And one fine day after 10 years, bam, it's just right there in front of you in the form of chronic depression. And you're just not able to find out what's happening with you. So you have to trace back and see, you know. So when you try to understand your life, बहुत सारे उसमें चीजें हैं जिसमें आपको ये अंडरस्टैंड करना होता है कि वेलबींग में आपकी स्लीप कितना ज्यादा काम करती है. अगर आपको रेम स्लीप नहीं आई है, अगर आपको इंसोम्निया हो रहा है किसी भी एक इवेंट की वजह से, that's not something that you should just ignore, take for granted. Exactly. आपके माइंड में बहुत सारे important functions हो रहे होते हैं जो परफॉर्म हो रहे होते हैं जब आप सो जाते हैं, you know, when you take a good night's sleep. So it's not just a beauty sleep, it's something that is actually recharging your whole body and your mind.
So we need to be aware of these elements as well, because most of the time हमारा depression उस जगह पे जाके stuck हुआ होता है जहाँ पे वो event process नहीं हुआ होता या वो emotion process नहीं हुआ, right? बिल्कुल ऐसा So ही yeah, है। और बहुत सारे लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरते हैं और पूरी पूरी बिल्कुल। लाइफ उनकी जो है ना कोई इसमें एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, लोग जो हैं ऐसे इंसान के बिहेवियर को देखते हुए रिटेलिएट कर रहे होते हैं उसके साथ ना, और समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम। एंड ये चीज़ आई थिंक दिस दिस यू नो हैपन्स, पहले तो घर से स्टार्ट होती है ये चीज़, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा बच्चा अगर वो ऐसे यू नो बिहेवियरल वो दिखा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स एट स्कूल, तो डोंट यू थिंक दूसरों का भी एक पार्ट यू नो इस पूरे प्रोसेस में, अदर पीपल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन यू नो हाउ दे रिएक्ट टू अ person like this who may not know what he's going through himself, जो वो खुद नहीं समझ सकता, और दूसरे लोग उसकी यू नो एक अजीब से बिहेवियर को देख के हम बहुत आराम से कह देते हैं ये इंसान ऐसा है, लेकिन हम ये नहीं समझते या ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो ऐसा क्यों है, एंड मे बी अगर हम इस चीज़ को समझे तो हम उसको आगे से हेल्प कर सकें। You're absolutely right. Again, I will reiterate the point when I say कि most of the things हमारे साथ जो जितने events हो रहे होते हैं ज़िंदगी में, अगर वो linger on हो रहे हैं, वो usually इसी वजह से हो रहे होते हैं क्योंकि help नहीं होती आपके आसपास। Most of the time हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो क्योंकि उनके अपनी perception है एक reality का, उनका अपना एक map है जो वो लेके फिर रहे हैं, उनका अपना एक model of the world है, वो उस तरह से आपको परसीव कर रहे हैं, और उनके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में एक ऐसी खातून जो इतनी पढ़ी लिखी है वो स्टूपिड कैसे हो सकती है, और क्या कोई ऐसा मर्द जो इतना रिस्पॉन्सिबल है वो ये मिस्टेक कैसे कर सकता है। तो हर किसी का मॉडल ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट है। हमें सिर्फ ये एज ए बेसिक ह्यूमन बीइंग हमें कुछ, अगर वो कोई कहता है ना कि देखें सोसाइटी में सबके साथ मिलके रहना होगा, हार्मनी के साथ रहना होगा, लड़ाई तो बहुत कर लेते हैं लोग और झगड़े के साथ रहने में भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बट to actually live with tolerance, that is something that that needs to be worked upon. So for example, just for your family, आप आसपास के लोगों का भले भले मत करें, but अपने बहन भाइयों का, अपने siblings का, अपने parents का, अपने your kid, your husband, your wives, I mean, just understand one thing about them is that one, it's a behavior, and a behavior is mostly reactive. Most of the time it's reactive. They're not responding to you, they're reacting to you. Okay, if they're shouting and yelling, they're reacting. If they're exactly, and if they are throwing things, they're reacting. If they are just snapping at you, they're reacting. If you're calling nagging, that's reaction. But वो react क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास triggers हैं आसपास। वो trigger क्या है? तो क्या पता आपने अगर सॉक्स जो है वो बिस्तर पे रख दी है तो वो ट्रिगर है उसका, तो उसको एक ही दफा एड्रेस कर लो। बिल्कुल वही बात है ना कि हम आगे वाले इंसान की कदर करेंगे एज एन इंसान, तो छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो लाइफ तो विल बी वे वे बेटर एंड इजियर टू लिव विद, यू नो। सो यस, everyone plays a part, and everyone should play a part, in making each other's life better. And the first step of doing that is to accept the fact that people are not their behaviors. This is something that you need to sit down and talk about. Yeah. Communicate. Yeah. Absolutely. Mariam, what is well-being? Well-being is an umbrella term. It has various aspects in it. लेकिन holistic well-being जो होता है, ठीक है, उसमें approximately 8 aspects होते हैं। सही है? Yes. आपका spiritualism उसमें आता है, आपका education आता है, career आता है, your relationships, your travel, your needs, intimacy, okay, you could say your physical fitness, all right, your emotional well-being, okay. There are various factors, approximately 8 to 7 factors that actually comprise your well-being. Yeah. But again, in simple words, if you need to understand what well-being is and how you can take care of it, is that healthy boundaries. ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे
अब मुझे गुस्सा नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपको लगता है कि ये 4-5 ट्रिगर हैं जो मेरे आसपास रहते हैं हमेशा, तो आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज अपने लिए क्रिएट करनी है। वो आप क्या कर रहे हैं, वो आप अपनी वेलबींग पे काम कर रहे हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है, आपकी नीड्स क्या है। 6 बेसिक नीड्स, 6 ह्यूमन नीड्स होती हैं, ठीक है। हर इंसान में सर्टेनिटी की भी नीड होती है, अनसर्टेनिटी की भी नीड होती है। अगर Right. आप सर्टन रहेंगे तो फिर आप बोर हो जाएंगे, आपको अनसर्टेनिटी भी चाहिए होता है, राइट। सिमिलरली Absolutely. देयर आर 4 मोर नीड्स फॉर दैट। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके पास वो कौन सी नीड्स है और वो कहाँ से फुलफिल हो रही है। एक दफा एक ये एनालिसिस जरूर कीजिएगा कि if you're a workaholic, you love to, you're passionate about it. You're not workaholic, but still you're passionate about your career, yeah. Right. And you'll just reflect on yourself that you're getting all the significance from that work that you're doing. Mm. Imagine significance stops coming from that work. Now you look for an alternative for that significance, because again you have the need to feel significant. अब वो कहाँ से fulfill होगी? तो आप जाते हो अपने स्पाउस के पास। एक्चुअली स्पाउस से पहले आनी चाहिए थी, पर आप जाते हैं फिर स्पाउस के पास एज अ सेकेंडरी, ओके। फॉर सम पीपल इट्स प्राइमरी दैट एंड सेकेंडरी वर्क, राइट। जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको दूसरी अब सिग्निफिकेंस कहाँ से मिल रही है। अगर वो आपको आपके स्पाउस से मिल रही है तो आपका लाइफ एकदम से रिलेशनशिप्स बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपको ये एकदम से लगता है कि ओके, तो आई थिंक मुझे काम पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नो, दैट्स नॉट इट। It's just that you're getting your need fulfilled from that place instead of that. Yeah. So insignificance, significance, certainty, uncertainty. There are 6 human needs that you need to understand for yourself. कि कौन सी चीज कहाँ हो रही है। जब आप अपने बारे में जान जाएंगे, when you're able to understand yourself better, that's the first step to probably work on your well-being. Right. Okay, तो फिजिकल फिटनेस तो आएगी ही। फिजिकल फिटनेस तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो करना ही करना है, आपकी वेलबींग का पार्ट। मेंटल और इमोशनल फिटनेस पे कौन काम करेगा। और आपने चाहे जितना फिजिकल फिट हो जाए, अगर आप अपने कुछ क्लटर है जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं यार मैं किससे बात करूं, यार कोई समझता ही नहीं है, किसी को मेरी बात ही नहीं समझ आ रही, तो आप क्या करते हैं कि आप I wouldn't sell coaching over here, but I can't help it because that's actually a solution that you go and talk to a coach. Because ये responsibility है एक coach की कि वो blank piece of paper की तरह आपको सुनेगा, और ना वो judge कर सकता है, ना वो suggest कर सकता है, ना वो advise कर सकता है. Because if the person is doing either of these, then it's not a coach. Okay? Right. And that's all you need. Yes. Your answers are within you. Absolutely. You just need to declutter it. Absolutely. So, that's exactly, in a few words, I can explain well-being. And well-being is a very vast topic. I can, probably do a separate session as well. Yeah, we should do a separate session. And we can also talk about, the global researches of well-being. Of course, we would. For sure. We could actually do a separate session on what organizations should do in Pakistan to promote well-being. What is happening right now? Where is the gap, and what they can do, to make it even better. So, inshallah, in future for sure. इंशाल्लाह। अच्छा मरियम, मैंने अक्सर तुमसे एक जुमला सुना है, ह्यूमन are the products of their habits. You keep saying that. Tell me, why do you say that? Because that's the case. Okay. Yeah. Okay, so again, there are ways to understand human being, right? एक और तरीका, एक और concept human beings को understand करने का ये है कि आप अपना आप इस बात पे इस बात को सोचें कि human beings are actually born to live in a certain routine. Okay. Once upon a time, we were hunters and gatherers, right? Once upon a time, we had a certain way to live. But again, even in that way, we developed certain tasks which became a routine. So when something becomes a routine, you start getting accustomed to it. And when you start getting accustomed to it, it just comes naturally to you. That's exactly how you're born. That's exactly how your body functions, Driving आपने सीखी, smoking आप कर रहे हैं, overthinking भी आपकी एक habit बन जाती है. Everything that becomes an involuntary action is your habit. Right. And you just don't even know it becomes your habit. Right.
one should be very very, अगेन वही बात है, आपको पहला स्टेप ही सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है? आपका सेल्फ अवेयरनेस का पहला स्टेप, अगर आप हैबिट्स को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से देखेंगे कि व्हाट डू यू डू होल डे, व्हेन डू यू वेक अप, how much time do you spend on the phone, how much time do you spend on overthinking on one incident, how much time do you spend on judging something, using your own map of the world, using your own model of the world, not even realizing the other person is not the way the person is, right? ये जो सारे हमारे काम हैं, ये सारे हमारी हैबिट्स हैं, राइट, ठीक है? ठंडा पानी पीना, गर्म पानी ना पीना, खड़े होकर पीना, बैठ के पीना, व्हाटएवर, ये जो हमें सिखाया हुआ, इस्लाम में भी हमें बहुत सारी टीचिंग्स दी हैं, जिसको अगर हम फॉलो करने लग जाएं, वो भी एक्चुअली आपको हैबिट्स बताती हैं। बिल्कुल। एक बहुत अच्छी चीज़ बाद में शेयर करना चाहूँगी मैं। आज ही मेरा इत्तेफाक हुआ ज़ाविया के कुछ एपिसोड्स देखने का, तो अशफाक अहमद इसमें बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी किसी फॉरेनर से मुलाकात हुई, और वो फॉरेनर उनसे बोलता है कि इस्लाम तो बहुत प्यारा दीन है, वो तो तुम लोगों की बस की बात ही नहीं है। तो अशफाक अहमद कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, हम मुस्लिम्स हैं, हमारा है दीन। कहते नहीं, इस्लाम इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। यस। और people who are following it currently, be that the people from subcontinent, India, Pakistan, Bangladesh, etc., they're not disciplined. And yeah. you will see, the person was telling Ashfaq Ahmed that you will see there will be a time, future is of Islam, and you will see there will be a time when 2,000 people from Europe, 2,000 people from US, 1,000 from Canada, a few hundreds from Netherlands, etc., these people will gather together and they'll be the spokespeople for Islam. And you all, yes, and they'll be the one who are going to, take the whole journey forward, because they are all disciplined. So again, discipline kya hai? Discipline is also routine. Discipline is also following a regimen for yourself. और अगर आप रेजिमेंट फॉलो नहीं करेंगे, आपकी बॉडी को नहीं समझ आएगी कैसे काम करना है, और आपकी माइंड को भी समझ नहीं आएगी कैसे काम करना है। तो we are being of habits, and we need to be very conscious of what habits we have. बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो सक्सेस को चेज कर रहे होते हैं, आई कीप टेलिंग इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू शुड अडॉप्ट द हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। ये छोटी छोटी आदतें होती हैं, है ना? Beautifully said. Yes. छोटी छोटी आदतें होती हैं आपकी, जो हम जिसे एटॉमिक बिहेवियर्स कहते हैं, वो सब कनेक्ट होके जो है ना वो आपको बनाती हैं द कैरेक्टर दैट यू बिकम। बिल्कुल ऐसे। 5 AM क्लब करके एक किताब है, आई थिंक रॉबिन शर्मा की, yes, आई एम नॉट मिस्टेकन। yes. वो भी एक कुछ उन सेट ऑफ लोगों की बात करता है जिनकी आदत है सुबह 5 बजे उठने की। बट कभी आप खुद करके देखें तो आप बिल्कुल क्लूलेस हो जाएंगे। सुबह 5 बजे उठ के आए, व्हेन आई डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक नाउ व्हाट टू डू, द डिटेल्स। अगर आपने सुबह 5 बजे उठना है तो there are a set of things that you need to do. So again everything, your habits are your actions. ये भी बात आप देखें। बिल्कुल। Habits are your actions done with your body or with your mind. With your mind, yes. So unless you perform any action, it cannot become a habit. It will just be a thought. So that's very important. एक और मैं क्वेश्चन बड़ा ही क्रिएटिव सा पूछना चाहूँगी मरियम। आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू आस्क। हाउ कैन अ पर्सन नो देमसेल्फ? अपने बारे में, अपने आप को एक इंसान कैसे समझ सकता है? अवेयरनेस कैसे क्यूरेट कर सकता है? बहुत प्यारी बात की है, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, अगेन आई विल नॉट एट ऑल I won't say that I know the answer completely, but I will share my own experience there. Probably that can help some people to get on the path of self-awareness. Again, when you start to reflect, जब आप अपने दिन पे रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने इमोशन पे, अपने रिएक्शन पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने एम्बिशंस पे, अपने वैल्यूज पे, इन सब पे जब एक दफा सोचते हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं, तो that's the first step towards doing it. देखिए, दुनिया हमारे बारे में, see, whatever we know about ourselves mostly comes from the world.
whatever we know about ourselves mostly comes from how Other the world people's. perceives us. Yes. Yeah. Yeah, it's our family telling us, it's our siblings, our friends, our mentors, our professional colleagues, and probably our spouses. We don't know ourselves. We're not the person who they perceive every day. We don't even know if you're that pretty or if you're that ugly. We don't know that, right? How would you know that? You need to first of all accept the fact that it's not you. Okay, it's not. It's their perspective. It's their perception of you. Okay, so अगर वो उनको लगता है कि आप धोखेबाज हैं, तो let me break that news कि because it's in them. Right. That trait is in them. That's why they're able to see it in you. And same goes for you. एक बहुत जबरदस्त, अगर आपने NLP के थ्रू अगर आपने सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो उसका एक बड़ा प्यारा तरीका ये है कि remember one thing: the whole world that you're perceiving is and you're perceiving it in whatever the way you're perceiving it is because you're like that. तो अगर आपको अच्छाई नजर आ रही है तो आप में अच्छाई है, अगर आपको बुराई नजर आ रही है तो आप में बुराई है, अगर आपको सब झूठे दोस्त मिलते हैं तो ब्रो झूठे हैं आप भी. You cannot even perceive anything. मतलब you cannot even perceive anything unless you have it in you. That's one of the presuppositions of NLP. कि अगर आपको आपके अंदर वो क्वालिटी या बैड बिहेवियर या टेंडेंसी नहीं है ना, तो आप वो दूसरे में परसीव भी नहीं कर सकते हो. एक बहुत जबरदस्त बात है कि वो लोग कहते हैं ना, अरे मैंने आपको कहीं देखा है, you remind me of someone. You know what is happening in your head? In your head, you're comparing that person's perception with an image that you had of a similar person, which was also a perception. So neither of the time you perceived the right person. You just perceived yourself. Imagine, अगर आपको लग रहा है कि यार आगे वाला बंदा जो है ना, no, I mean I can't trust the person. So there is something there. शायद आपको लग रहा है कि वो धोखा देगा क्योंकि आप में भी वो टेंडेंसी है धोखा देने की. तभी लोग कहते हैं कि कंसल्ट करें, मशवरा करें, एक और पर्सपेक्टिव लें किसी और से, और फिर एक डिसीजन लें. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो सोच रहे होते हैं ना, रियलिटी वो नहीं होती. मोस्ट ऑफ द टाइम रियलिटी वो होती है जो हमारे अंदर होता है. Right? So one step for self-awareness is to know that whatever is happening with you is inside you. You have it in you. That's why you're able to perceive it. And sometimes lot of things that are happening around are self-created also. वो हमारा दिमाग, हमारी सोच जो है खुद क्रिएट करती है. हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती हैं और हमें अफेक्ट कर रही होती हैं, दैट्स सेल्फ क्रिएटेड. और दैट्स है ना, ऐसा ही है ना. बिल्कुल आपके आप वो कहते हैं ना कि हर एवरी you should not trust all your thoughts. Yeah. They're not reality. आपका दिमाग, अल्लाह मियां ने ऐसा एक मैजिकल एक्सपीरियंस बनाया है आपका दिमाग. Your mind is a beautiful abyss of wonders that you can't comprehend, and it can play tricks on you. If it sees that you're idle, it will play tricks on you and you won't even get it. So that's why they say कि अपने mind को थोड़ा सा revive करें, focus दें. The more wherever you focus, that's what you get out of it. Yes, that's very true. That's very true. Yeah. रिकॉर्डिंग से हटकर मरियम, आज के सेशन में कुछ और कहना है? Do you think we are good? या कुछ और? I think हमने काफी एरियाज तो डिस्कस किए हैं. मुझे मेरी सजेशन ये होगी, देखो अभी हमने ना जहाँ तक ये कॉन्वर्सेशन हुई है ना, तो मेरा फीडबैक ये है कि हमने ज्यादातर NLP पे बात की है और कोचिंग के फायदे पे बात की है और अपने आप को जानने के बारे में बात की है. हम एक वेलबींग पे सेपरेट सेशन रखेंगे. हाँ, सेपरेट रखेंगे, उस पे सेपरेट रखेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा. इस वेलबींग के क्या तरीके हैं, क्या होते आए हैं, और एक सेपरेट रखेंगे कॉर्पोरेट्स के लिए. ठीक है, परफेक्ट. एक सेपरेट सेशन रख सकते हैं एंजाइटी के ऊपर भी, और एक सेपरेट सेशन रख सकते हैं डिप्रेशन के ऊपर. अच्छा मरियम, या फिर सिर्फ उन्हीं में ही पावर ऑफ नाउ करके कुछ एक सेशन कर देंगे. आई एम वेरी हैप्पी विद द सेशन, मजा आया. ओके, इट वाज फन, राइट? चलो, इट वाज यार. Anyway, ज़्यादा बोल गई मैं. नहीं, that's very good, very helpful, very important information. चलो, let me take a closing note.
थैंक यू वेरी मच मरियम, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया एज़ यूजुअल. एंड आई होप आज के सेशन में हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं हमारी जो ऑडियंस है इनके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा. आप लोग मरियम को रीच आउट भी कर सकते हैं. मरियम की सारी इन्फॉर्मेशन you'll find it below this video. You can check her social media handles and मरियम के कोचिंग और थेरेपी सेशंस आप ज्वाइन भी कर सकते हैं. And with that, I'm gonna sign off. Thank you so very much, Mariam, again for being with us. और इंशाल्लाह हम बहुत सारे और सेशंस भी करेंगे. Inshallah. Thank you so much, Zabad. I loved it today. Thank you. You're Take care, welcome. everyone. Take care, everyone. Allah Hafiz.